Hello students, once again welcome in the Real Edutainment YouTube lecture series of Concept Carnival. So in today's session we are starting with the CBSE का part. तो 9th CBSE में फिजिक्स कनेक्टेड जितने भी फॉर्मूलाज है, बेसिक फॉर्मूलाज, उसके बेसिक टेक्नोलॉजी, उसका कंसेप्ट, व्हाट आर द यूनिट्स बिहाइंड इट, वो सारे यहाँ पे स्टडी करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द 9th CBSE का बेसिक पार्ट. अपने 9th CBSE का फिजिक्स सेक्शन देखा तो there are total 5 chapters. Based on that 5 chapters, we'll start one by one. एक एक पॉइंट वन बाय वन स्टडी करते हैं, एक एक चैप्टर वन बाय वन स्टडी करते हैं. So let's start with the basic chapter, that is the laws of motion, or we can say force and the laws of motion. इससे कनेक्टेड चैप्टर, उसमें मोशन में इन्वॉल्व होगा. तो मोशन and laws of motion connected force, दोनों connected ही. So if we make a list of formulas, then what are the formulas? So first formula जो सबको पता है, that is speed. What is the speed? Speed is equal to distance upon time. कोई object अगर moment में that object has a speed, what is the speed? That is the distance, how much distance that object traveled divided by how much time उसने लिया होगा, how much time taken. So what is the speed? It is the distance upon time. And what is the unit? If I check the unit is meter per second, because the distance is meter and time is second. Now connected to speed there is a one more, that is a velocity. What is the velocity? Distance is replaced by displacement. So velocity के फॉर्मूला में distance replace होगा displacement के term से. So it is a displacement upon time, but unit never changes. Unit change नहीं होगा. Speed and displacement, sorry, speed and velocity में distance replace होगा displacement से, but the unit remains same, that is a meter per second. Unit is as it is, which is meter per second. These are the two basic formulas. थोड़ा आगे जाएंगे. Third one is, even in a velocity there are two types of velocity. Initial velocity, which is represented by u, and final velocity is represented by capital V, sorry, small v. So जब भी कोई फॉर्मूला लिखोगे याद रखना है, वेलोसिटी में there are two types, initial and final, u and v. Next term is acceleration. What do you mean by acceleration? कि जब भी हम कोई भी व्हीकल चलाते हैं, अगर मैं स्कूटी चला रहा हूं, तो while driving a scooty we can use a change in velocity. आप लोग वेलोसिटी इंक्रीज करोगे, गाड़ी स्टार्ट किया तो वेलोसिटी 0 था पहले, अभी इंक्रीज हो रहा है. तो दैट मींस जब भी मैं वेलोसिटी चेंज करूंगा, दैट टाइम देयर इज अ मोर टर्म, देयर इज अ वन मोर टर्म, दैट इज एक्सेलरेशन. तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन. तो इट इज अ वेलोसिटी by time. Acceleration is represented by a, so it is a v minus u upon t. So a stands for acceleration, v stands for final velocity, u stands for initial velocity, and t stands for time. So यहाँ पे लिखते हैं v is equal to final velocity, u is equal to initial velocity, and t is equal to time. And what is the unit? The unit is equal to meter per second square, because velocity is a meter per second. Again there is a one more division of time. Velocity numerator में ना, तो वो पहले से मीटर पर सेकेंड था. Again there is a one more time. तो second divided by second, it's not a cancellation. It's a meter per second plus second. तो second and second square होके मीटर पर सेकेंड बने. ठीक है, लॉजिकल याद रखो. तो फर्स्ट इज स्पीड, सेकेंड इज वेलोसिटी, थर्ड वन इज एक्सेलरेशन. एक और आगे मूव करते हैं. इतना चेक करो सब लोग. एनीवन एनी डाउट? लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ वन. So fourth formula. After the acceleration, we have many technologies. Start करते हैं basic, that is the force. The force is equal to mass into acceleration as per the Newton's second law of motion. Newton ने simply बोला कि whenever you have force, that means there is some acceleration on that object. So mass into acceleration. So force is equal to ma. कभी कभी हम लोग इसको force is equal to ma ऐसे बोलते हैं. ठीक है, because it is a ma, it is a mother of all the physics. न्यूटन ने जितना भी डिराइव किया. So force is equal to ma. And what is the unit?
mass is represented by kg and acceleration is represented by meter per second square. It is a meter per second square. So kg meter per second square, which is also represented by capital N, which is Newton. There are two units. The first unit is kg of mass, acceleration is meter per second square. दोनों मिला के कलेक्टिव यूनिट बिकम्स न्यूटन. तो 1 न्यूटन इज 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आपको याद रखना. एमसीक्यू में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस आती है. तो फोर्स का यूनिट इज न्यूटन, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फिफ्थ वन, देयर इज वन मोर टर्म, मोमेंटम. मोमेंटम इज वेरी इजी concept. राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर. मेरे बॉडी का कुछ तो मास है, कुछ तो वेलोसिटी होगा. देन देयर इज अ मोमेंट. देन देयर इज अ मोमेंट. आफ्टर सम टाइम आई एम हियर. That is from location A से location B मैंने travel किया. There is a creation of new terminology, momentum. What is a momentum? Momentum is equal to mass into velocity. But we have two types of velocities, initial and final. What we can do? V minus U. The formula is momentum is represented by capital P. So momentum is represented by capital P. Sometimes also small p किया तो भी चलेगा. It's a V minus U. Velocity to V minus U. And what is the unit? Mass is kg and velocity is a meter per second. Unit is equal to kg meter per second. These are the basics फॉर्मूला जो आपको याद रखना है. लिस्ट थोड़ा आगे चला गया. तो सिक्स्थ वन इज द एनर्जी. उसके लिए एक और टर्म लेते हैं, दैट इज वर्क डन. वर्क डन मींस आपने कुछ ना कुछ काम किया. ऑन दैट ऑब्जेक्ट अपने फोर्स अप्लाई किया. ड्यू टू फोर्स देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी. मैं यहाँ पे खड़ा हूं, किसी ने पीछे से धक्का दिया तो मेरा बॉडी आगे मूवमेंट हुआ, मतलब मेरे ऊपर किसी ने काम किया. सो व्हाट इज अ वर्क डन? दैट इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी विद अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो व्हाट इज अ वर्क डन? इट इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट? तो क्या आएगा? इट इज F into S. So what is the unit? Work done is represented by W. And what is the unit? Unit is equal to kg meter per second square. And displacement क्या आएगा? 1 more meter. तो यह क्या होगा? That is a meter square. So it will become kg meter square upon second square. ये भी यूनिट जनरेट कर सकते हैं for the work done. There is a one more unit. याद रखना है. kg meter per second square क्या है? kg meter per second square is a Newton. तो आंसर क्या आएगा? That is Newton meter. So first one is kg meter square upon second square. Second unit is a Newton meter. Third unit is a joule. तो इन दोनों को मिक्स किया. Third unit is joule, which is denoted by capital G. Okay. So just go through the formulas. If you have any doubt with the chat box, हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक, fast. चलो आगे बढ़ते. सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये भी हो गया. वर्क डन इज इन टर्म्स ऑफ जूल. लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज सेवेंथ फॉर्मूला. नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज. सो एनर्जी कैसे काउंट होगा? एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज वर्क डन. याद रखना है. समटाइम्स एनर्जी इज काउंटेड इन टर्म्स ऑफ वर्क डन. बट एनर्जी दो टाइप की आती है. द फर्स्ट वन इज अ काइनेटिक एनर्जी, सेकंड इज अ पोटेंशियल एनर्जी. तो उसके अंदर सब टाइप लेते हैं. फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इज वेरी मच सिंपल. इट्स अ हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर. सो क्या आएगा फॉर्मूला? वेलोसिटी एक नहीं दो है. इट्स अ v माइनस यू. तो आंसर इज हाफ मास v minus u square. And we already informed that the energy is same as work done. एनर्जी एंड वर्क डन दोनों सेम है. मैंने कुछ तो काम किया, जितना काम किया उतना एनर्जी मैंने स्पेंड किया.
So the unit of work done is same as energy. No need to think. So unit क्या आएगा? Unit is again work done का unit as it is. It is joule. It is capital G. Same Newton meter लेगा तो भी चलेगा. The second one is a potential energy. So what is the potential energy? It's a mass into acceleration due to gravity and due to height also. So it is a combination of three terms. The first one is the mass of the object. On that object, कितना acceleration due to gravity हो रहा है, छोटा g, and the height h. So what is the formula of potential energy? So P is equal to mgh. The unit remains same. The work done का unit is joule. Potential energy also joule. The unit is joule itself. ठीक है? Just go through all the formulas. उसका एक और formula देखते हैं. Energy से connected, there is a one more formula, that is the power. Power electricity में भी आएगा, that is a volt into current. But in the physics, अगर मैंने motion study किया, तो power का formula is different. Power is work done upon time. So it is a work done upon time. So work done may be in terms of kinetic energy, work done may be in terms of the potential energy. So it remains as it is. As per the given condition, work done vary होगा kinetic की potential. Horizontal motion होगा तो kinetic, vertical motion होगा तो potential. So क्या आएगा? It is a power is equal to capital P work done upon time. But what is the unit? Work done का unit क्या है? That is joule and time is seconds. So joule per second, उसको हम लोग watt ऐसे में represent करें. Capital W. So joule per second also represented by one more term. That is a watt capital W. So नए terms आ गए. Newton, joule, even watt, these are the name of scientists. तो साइंटिस्ट ने बहुत सारा काम किया है so that in the physics उनके नाम से यहाँ पे क्रेडिट जनरेट हुआ, तो उनके नाम से यूनिट बना दी. तो आप भी कुछ ना कुछ अच्छे काम कर सकते हो तो आपके नाम से भी यूनिट बनेगा, तो इंडियन सोसाइटी आगे बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड एजुकेशन. ठीक है, जस्ट गो थ्रू द पॉइंट, देन आगे बढ़ते. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. Now, in the force and Newton laws of motion, there are three basic formulas that we need to follow. The first formula is, if I follow laws of motion, as per that, there are three basic formulas. The first formula is V is equal to U plus AT. This is just a representation of acceleration. We can frame the formula of acceleration also. A is equal to V minus U upon T. तो उससे ये कन्वर्ट किया. सेकेंड फॉर्मूला इज S is equal to UT plus half AT square. And the third formula is V square minus U square is equal to 2S. ये भी फॉर्मूला है. These are the three different formulas comes under the laws of motion. ये सारे फॉर्मूला में U is initial velocity, V is a final velocity, A is acceleration, T is a time, S is equal to displacement. आपको सारे टर्म्स यहाँ पे पता होना चाहिए. ठीक है. Now there is a one more formula. If I want to denote work done, so work done का एक और फॉर्मूला हमने देखा था. सी पावर का बेसिक फॉर्मूला हमने क्या देखा था? वर्क डन अपॉन टाइम. क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते, ये तुमने पहले से लिखा, इसमें नया कुछ भी नहीं. बट व्हाट इज अ वर्क डन? वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. And what is the displacement upon time? It's a velocity. तो आंसर क्या आएगा? एक नया फॉर्मूला जो किसी ने देखा भी नहीं होगा. So बहुत कम स्टूडेंट्स को फॉर्मूला पता है कि पावर इज इक्वल टू एफ वी माइनस सी. चेक करो सब लोग. So power is equal to एफ वी माइनस सी. These are the formulas. ये सारे फॉर्मूलाज आपको कहाँ पे यूज होंगे? इन फिजिक्स के मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में यूज होंगे. नेक्स्ट जो हम वीडियोस ले लेंगे उसमें हम लोग साउंड जो कनेक्टेड चैप्टर्स है, ग्रेविटेशंस, देन द प्रेशर्स, जो ऑप्टिक्स वाले चैप्टर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. These are the list of 10 formulas that you need to follow. आपको मोशन लॉज ऑफ में यूजफुल होगा. तो करना क्या है?
जितने फॉर्मूले आज के लेक्चर हुए सबको नोट डाउन करना है विद द यूनिट, उसको रिवाइज करना है, उसको जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसके ऊपर जो भी सम्स है उसको भी कंडक्ट करेंगे, बट फॉर्मूला सबसे पहले आना चाहिए, देन ओनली फिजिक्स इजी होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, सो उनको भी जो फॉर्मूलाज है उसके भी पता चलेगा, बिकॉज ये फॉर्मूला इजी लगते हैं, एग्जाम के टाइम याद नहीं आता है, दैट इज द मेन थिंग। अगेन फॉर द मोर अपडेट्स यू नीड टू सब्सक्राइब दी यूट्यूब चैनल ऑफ रियल एजुटेनमेंट। यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, चलो बाय।